जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आज हम शुरू करते हैं लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स के अगले चैप्टर। बट उससे पहले लेट्स जस्ट गो बैक टू व्हाट वी हैड रेड यस्टरडे। हमने कल पढ़ा कि हाउ स्वामी जी's master wanted him to become a very tough Swami. He wanted Swamiji to be a very tough cookie. He didn't want him to be frail or sissy kind of guy. So he would send him at night to get the groceries, and Swamiji would walk 12 miles to the shop to get the supplies. And he would also face, tigers and snakes crossing the path, but nothing could deter him. And because Swamiji's master also wanted him to become a very, very fearless man. Then we learned how Swamiji jumped into the river at the drop of a hat. When his master asked him who could, cross the river would be my disciple. His master wanted to see, how his disciples could obey him, or who would just jump, without giving it a second thought. So Swami Ramaji jumped, into the river. And then that shows his obedience and his audacity. He was quite bold as well. उसके बाद स्वामी रामा जी ने हमें बताया कि फेथ के साथ साथ डिटर्मिनेशन, एक संकल्प शक्ति का होना बहुत जरूरी है, एंड दीज आर एसेंशियल ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट. देन वी लर्नड दैट बाय ऑफरिंग, हमने एक ये भी चीज सीखी कि जब भी कोई डिसाइपल would offer, bundle of dry sticks to Guruji, to their respective guru, it meant that they were offering, to burn their all negative traits. They wanted the guru to burn all the negative traits, and at the same time they wanted to get relief from the karmic thing of the past. तो ये भी हमने सीखा. और फिर हमने सीखा कि स्वामी जी said, I'm never lonely, as a lonely person is one who is not aware of his complete fullness. And we should seek within. We should not depend on anyone. We should not depend on externals. Swamiji said, I'm happy with my friend within, and we should also enjoy the real self. Uske baad we learned that Maya is not self-existent, yet it appears to exist. It's like a mirage, and Maya is a universal illusion, and the less attachment leads to the inner strength, and the more inner strength means the nearer the goal. And in attachment, we become selfish, and it creates bondage, whereas love bestows freedom. Then we learned a story of station master, how he wanted to be disciple of master, and when Swamiji's master, kept a condition that he should not lie for three months, which is kind of a very, very big period, and he just admitted, in front of the, जो भी वो करने आए थे ना, इन्वेस्टिगेशन वगैरह, जो भी थे सुपरवाइजर्स वगैरह, उसको उन्होंने बिल्कुल ऐसे बोल दिया कि हाँ मैं भी शामिल था ब्राइब लेने में, and how he landed in the jail and how his family left him. And but he practiced truth, with his mind, speech, and action for 3 months, which as a result he reaped the harvest, of his truthfulness, due to that, or Kese, he was rewarded abundantly, in terms of materialistic things and in terms of spiritualism as well. So his master taught Swamiji that do not get attached to the pleasures received from the objects of the world, and do not covet anyone's property, women, and other things, or property, or whatever, or wealth. Yes. And then his master taught him to be selfless and surrender before the highest one. And finally, we learned about the direct experience, that the importance of direct experience is the highest of all. Okay, so today we're going to start with a new chapter, that's real knowledge removes suffering. The self-reliance is important. It comes when you start receiving experiences directly from within.
No doubt, you need a teacher, you need a guide. I'm not telling you that you should not learn things from other people or that you need not study books. But I have met people who did not even know the alphabet, and yet, whenever we had difficulty in understanding some profound truth or scripture, they alone could give us a solution. तो ये बहुत अच्छी बात बताई है। कहते स्वामी जी कहते मैं उन लोगों को भी मिला हूँ जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कोई अल्फाबेट्स भी नहीं आते थे, पर जब भी कोई मुश्किल चीज होती थी तो उनके पास जो डीप नॉलेज थी, दे कुड टेल यू द प्रोफाउंड ट्रूथ, क्योंकि वो जो नॉलेज है ना वो अंदर से आती थी, उनको वो आत्मा से आती थी। इट हैड नथिंग टू डू विद द फॉर्मल नॉलेज, एज आई वुड से। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं, once I was teaching the Brahma Sutras, it is one of the most abstruse books in Vedantic literature, aphorism which I myself did not really understand. I explained to my students and they seemed satisfied, but I was not. So in the evening, I would go to a Swami who had not actually studied scriptures. He couldn't even sign his name, yet his knowledge was unmatched. He said, you will never understand these terse aphorism if you do not have direct experience. Then he told me this story to help me understand the difference between direct and indirect knowledge. तो स्वामी जी कहते नो डाउट मैं फॉर्मली पढ़ाता भी रहा हूँ, वही एफोरिज्म और वो इतने बड़े बड़े फ्रेजेस भी मैंने पढ़ाए, इतने बड़े बड़े प्रोवर्ब्स तक मैंने सिखाए, पर मुझे उनका मतलब नहीं पता था, पर येट मेरे स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाते थे। पर जैसे है ना कि कहते जैसे एक स्वामी जी से मैं मिला, वो अपने नेम भी नहीं साइन कर सकते थे, बट जो उनकी नॉलेज थी दैट वाज अनमैच्ड। इवन द नॉलेजेबल पर्सन कुड नॉट मैच हिज अनमैच्ड नॉलेज। कहते वो फर्क होता है डायरेक्ट नॉलेज में और इनडायरेक्ट नॉलेज में। कहते a master had a student who had never seen a cow nor tasted milk, but he knew that milk was nutritious, so he wanted to find a cow, milk it, and drink the milk. He went to his master and asked him, do you know anything about cows? The master said, of course. The student requested, please describe a cow to me. The master described a cow. A cow has 4 legs. It is a tame, docile animal, not found in the forest, but in villages. Its milk is white and it's very good for your health. He described the type of tail and ears, and it has everything. तो जो भी, क्योंकि उनके जो स्टूडेंट वो सो नाइव, उन्होंने तो कभी देखी नहीं थी गाय, तो उनके जो मास्टर थे उन्होंने सब बताया भी गाय कैसी होती है, दूध देती है, उसकी 4 टांगे होती हैं और वो बड़ी डोसाइल होती है, कहना मान जाती है, ओबीडियंट होती है, और वो अपने फॉरेस्ट में नहीं, इट्स लाइक अ डोमेस्टिक एनिमल, विलेजेस में पाई जाती है। After this description, the student went in search of a cow. On the way, he came across a statue of a cow. He looked and thought, this is surely what my master described to me. By chance, that is, some people who lived nearby were whitewashing their house, and there was a bucket of whitewash near the statue. The student saw it and concluded, this must be the milk which they say is so good for you to drink. तो देखिए, क्योंकि उस बेचारे उसको तो कभी पता ही नहीं ना, उसने गाय देखी, चलो एक स्टैचू देख लिया गाय का और साथ में बाल्टी पड़ी थी, तो ऑब्वियसली उसने उसको पेंट वाली बाल्टी को सोचा ये दूध पड़ा है। The student saw it and concluded this must be that milk which they saw is so good for you to drink. He gulped down some of the whitewash, became terribly ill, and had to be taken to a hospital. Then he recovered. He went back to his master and angrily charged, You are no teacher. His master asked, what's the matter? The student replied, your description of cow was not at all accurate. अब देखो वो पुअर गाय एक ही बारी में सारा वो व्हाइट वॉश उसको ना दूध समझ के पी गया, which is something I'm reading, I've heard it for the first time कि कोई पेंट को दूध समझ कैसे पी जाए, but that's the difference between जो हमें बताने जा रहे direct knowledge and indirect knowledge. So उसने बोला कि जो आपकी डिस्क्रिप्शन थी काऊ की वो बिल्कुल भी ऐप नहीं थी, बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं थी। तो उनके मास्टर कहते भी हुआ क्या? He explained and the master asked, did you milk the cow yourself? तो वो कहता no, that is why you suffered. कहते the cause of suffering among intellectuals today is not because they don't really know, they know a little,
but what they know is not their own knowledge, and that is why they suffer. A little or partial knowledge is always dangerous, like partial truths. A partial truth is not truth at all. So is the case with partial knowledge. The wise directly perceive truth. The sage who did not even know the alphabet of any language would always remove my doubt. Systematic study under a self-reliant and competent teacher helps in purifying the ego. Otherwise, scriptural knowledge makes one egotistical. He is called an intellectual man today, only collects facts from various books and scriptures. Does he really know what is he doing? Feeding intellect with such a knowledge is like eating a food with no food value. One who constantly eats such a food remains sick and also makes others sick. We meet many teachers and they all teach well, but a student can assimilate only which is unalloyed and comes directly from self-experienced teachers. तो वही चीज है ना, किसी को ऐसे पाठ पढ़ाना तो बहुत आसान है जब तक बंदा खुद एक्सपीरियंस ना करे। और कई तो ऐसे जो मास्टर्स होते हैं उनकी कोई फॉर्मल या कोई इतनी एजुकेशन उनकी नहीं होती है, पर जो उनको शायद यूनिवर्स के सीक्रेट्स पता होंगे क्योंकि वो उनके डायरेक्ट नॉलेज से आया है। सो दैट इज द डिफरेंस। कहते हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, you know. So किसी के बिल्कुल भी इस तरह से पीछे नहीं लग जाना। कहते हैं little or partial knowledge is always dangerous, like partial truth. जब तक हमें पूरी सच्चाई ना पता हो तो हमें उस तरह से कोई चीज को ऐसे नहीं है कि ब्लाइंड फेथ से मान लेना चाहिए। Okay. The next chapter is a mantra for happiness. जो इस लेसन में हमने यही सीखा है कि डायरेक्टली जब हम परसीव करते हैं ना ट्रुथ, उसका महत्व होता है। ऐसे नहीं है कि किसी ने कुछ भी कह दिया और वो हम मान लें। तो ये भी नहीं है कि बहुत उस तरह फॉर्मल लैंग्वेज से ही ज्ञान आता है। तो ज्ञान तो ईश्वर की जब कृपा होती है ना, तो जो ना भी इतना पढ़ा लिखा हो उसको भी अंदर से आ जाता है। That is a mantra for happiness. The mantra is a syllable, a sound, a word, or set of words found in the deep state of meditation by the great sages. It's not the language in which human beings speak. Those sounds which are received from the subconscious state lead the seeker higher and higher until he reaches the perfect silence. The more awareness is increased, the more mantra reveals new meaning. It makes one aware of a higher dimension of consciousness. Exploring the noble tradition by selling mantras in the marketplace is absurd. ये तो बिल्कुल सही बात है। मंत्रा तो एक साउंड है, ए वर्ड है, सिलेबल है, सेट ऑफ वर्ड्स है, जो कहते हैं देवी देवता भी या जब हिमालयन मास्टर्स भी अपने डीप मेडिटेशन में होते थे तो कैसे ईश्वर की कृपा से उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज पहुंच जाती थी और उनको हायर और हायर डायमेंशन में भी ले जाती थी और वो परफेक्ट साइलेंस में ही उनको इस चीज का एहसास होता था। पर आजकल तो कई बार कहते हैं ऐसी चीजें आ गई हैं कि मार्केट में जस्ट पैसा कमाने के लिए भी मंत्र बेचे जाते हैं, which is really weird and absurd. कहते हैं mantra is exactly like a human being having many sheaths, gross, subtle, more subtle, and subtlest. Take for example Om. These three letters actually represent the three states. कौन सी states हैं ओम की? Waking, dreaming, and sleeping. All the three bodies, कौन सी हमारी three bodies होती हैं? Gross, subtle, and more subtle. But the fourth state of the finest body of the mantra is formless, soundless, and indefinable. A student, if he understands the process of Laya Yoga, dissolution, can know the formless body and superconsciousness of mantra. Mantra is very powerful, and it's very powerful and essential, a compact form of prayer. If remembered constantly, it becomes a guide. वो तो बिल्कुल सही बात है। मंत्रा क्या है? एक compact prayer है। जैसे हम गुरु जी का मंत्र करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये अपने आप में एक compact prayer है। And it's because जिस जो मंत्र हम बार बार बोलेंगे उसकी इतनी एनर्जी बन जाती है, इतना ऑरा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और which makes us positive, and it's like a compact prayer. कहते I used to collect mantras like people collect material objects. तो स्वामी जी अपना बिल्कुल blatantly सारा कुछ ओपनली बता रहे हैं। कहते मैं तो ऐसे मंत्र इकट्ठे करता था जैसे लोग कोई चीजें इकट्ठे करते हैं, hoping that some new mantra I was about to receive would be better than what already I had.
what I already had. Sometimes I would compare myself to other students and think my mantra is better than his mantra. I was very immature. I call it crazy spirituality. तो स्वामी जी उस टाइम बहुत नाइव एंड बड़ी रॉनेस्ट होती है ना, कहते मेरा तो यही होता था ना, जैसे हम कहते हैं मेरी साड़ी मतलब इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, तो उन्होंने कहना कि माई मंत्रा इज बेटर देन हिज मंत्रा, या मेरी साड़ी उस साड़ी से उसकी साड़ी से सफेद है. एंड वो कहते मैं बहुत इमेच्योर था उस टाइम पे. आई वुड कॉल इट क्रेजी एंड आई वुड कॉल इट जस्ट लिटिल बिज़ार. देयर वाज अ स्वामी जी कहते हैं, there was a Swami who lived quietly deep in the Himalayas between Uttarkashi and Harsil. I went to see him. तो स्वामी रामाजी एक स्वामी जी की बात बता रहे हैं जो हिमालयस में उत्तराकाशी और हर्सिल के बीच में रहते थे. कहते I went to see him and when I arrived he asked what is the purpose of your coming. I told him I want to receive a mantra. You will have to wait, he replied. When Westerners go to someone for a mantra, they are prepared to spend a lot of money, but they didn't want to wait. I tried the same thing. I said, Swamiji, I'm in a hurry. कहते जब वेस्टर्न लोग आते हैं ना वहां से, वेस्ट साइड से आते हैं, तो उनमें इतनी पेशेंस नहीं होती. वो तो पैसे देख के जितने मर्जी पैसे देने को तैयार हैं, बस उनको मंत्र चाहिए बेहुकर क्रोक. कहते मेरा भी वही एटीट्यूड था. आई वाज इन अ हरी. तो वो क्या कहते हैं वो वाले स्वामी, ओके देन कम नेक्स्ट ईयर. ही सेड इफ आई स्टे नाउ हाउ मेनी डेज okay, how many days will I have to wait? I asked. जब उन्होंने बोला अगले साल आओ, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं अभी रुक जाऊं तो मुझे कितने दिन तक वेट करना पड़ेगा? I asked. You will have to wait as long as I want you to wait, he replied. So I waited patiently 1 day, 2 days, 3 days, till the Swami wouldn't give me a mantra. On the 4th day, he said, I want to give you a mantra, but promise that you will remember it all the time. तो स्वामी जी कहते मैंने प्रॉमिस कर दिया, ठीक है मैं इसको हमेशा से याद रखूंगा. He said, let us go to the Ganges. Countless sages have done spiritual practices on the bank of the sacred Ganges and have been initiated there. I stood by the river and said, I promise I will not forget this mantra. I repeated this promise several times, but he still delayed. कहते मैंने उनको वचन भी दिया कि ठीक है मैं इस मंत्र को हमेशा याद रखूंगा, अपने दिल से याद रखूंगा, इसको कभी नहीं भूलूंगा. फिर भी वो पता नहीं क्यों देरी कर रहे थे. At last I said, no matter where you live, sorry, at last he said, yeah, no matter where you live cheerfully. देखो उन्होंने कितना बड़ा मंत्र दिया, और स्वामी जी क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं उनको कौन सा मंत्र मिलेगा. तो वो दूसरे स्वामी जी कहते हैं ये तुम्हारे लिए मंत्र है. No matter where you live cheerfully. This is the mantra. Be cheerful at all times, even if you're behind bars. Anywhere you live, even if you have to go to a hellish place, create heaven there. Remember, my boy, cheerfulness is of your own making. It only requires human effort. You have to create cheerfulness for yourself. Remember this mantra of mine. I was both very happy and very sad because I'd expected him to give me some unusual sound to repeat, but he was more practical. I apply this mantra in my life and find it successful everywhere. His spiritual prescription seems to be the best of physicians, a real key for healing oneself. तो सच में क्या स्वामी जी सोच रहे थे, क्योंकि स्वामी जी को तो बहुत आदत थी बहुत सारे मंत्रस कलेक्ट करने की, as if he was collecting some materialistic objects or kind of different objects. पर ये जो मंत्र दिया, ये तो मुझे लगता है कि ये हम सबके लिए है कि हमेशा खुश रहना चाहिए, जो कि मुश्किल लगता है, बिकॉज हम खुश रहते हैं, हमारी होती है कंडीशनल हैप्पीनेस, राइट, कि हमें कोई चीज मिल गई, कुछ अच्छा हो गया तो हम खुश होते हैं. जब कुछ हमारे साथ अच्छा नहीं होता, we make a long face, our face is pulled down, we feel dejected, we feel sad. But this is the beautiful mantra given by the other master to Swamiji, that no matter what, live cheerfully. कहते चाहे तो फिर तुझे जेल हो जाए, चाहे तुम हेल वाली जगह पे चले जाओ, पर उसको भी तुम हेवन बनाना सीखो, उसको भी पैराडाइज बनाना सीखो. कहते ये जो खुशी है ना, ये तुम्हें खुद ही लानी पड़ेगी, ह्यूमन एफर्ट से ही आती है. ये जब तक तुम अपने आप को खुद खुश नहीं रखोगे ना, जब तक गुरुजी नहीं कहते खुश रहा करो, तो ये मंत्र चेयरफुलनेस ऑल द टाइम, फिर आपकी लाइफ जैसी मर्जी हो, ऊपर नीचे हो, बस आप खुश रहो. क्योंकि जो उस हालत में भी खुश रहना सीखे ना, दुख में भी खुश, या कुछ भी हो जाए, आई थिंक वो बहुत बैलेंस वाली जिंदगी होती है, और गुरुजी की कृपा से वो आने ही लगती है. तो इस चैप्टर में हमने यही सीखा है कि ठीक है, जो मंत्रास, कई मंत्रास तो देखो किस तरह से आए हैं, सेजीज की डीप मेडिटेशन में, प्रार्थनाओं से कैसे भी आए हैं, ऊपर से दिए गए हैं. और ये चीज है कि yes, we should try to, at least we can try to stay cheerful all the time. Okay, next chapter is a mantra for bees, BWS, bees.
कहते there is a type of mantra called apta mantra, APTA, apta mantra, which belongs uniquely to the particular sage who imparts it. I want to tell you about an experience I had with such a mantra. स्वामी जी कोई एक आपता मंत्र होता है, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताने जा रहे हैं. स्वामी जी कहते हैं, there once was a Swami who lived in a small hut across the river from Rishikesh. In order to get there, you had to cross the Ganges on a swinging rope bridge. At the time, Rishikesh was not overly populated. Wild elephants sometimes came at night and ate the straw from the walls and roof of our huts. तो उस टाइम इतने पॉपुलेशन नहीं होती थी, कहते जो वाइल्ड एनिमल्स थे ना, तो कभी भी रात को आके वो उनके जो रूफ के जो हट्स के स्ट्रॉज हैं वो खा जाते थे. While we were sitting inside, they would come in big herds of 30 or 40 and would sometimes eat half of hut. तो देखिए कैसे हाथी झुंड में आते थे, कहते आधी हट खा जाते थे उनकी. Tigers also roamed about. It was still quite primitive. Following my master's direction, I went to stay with that Swami across the river. Early in the morning, Swamiji would go for a dip in the Ganges, and I would go with him, for I was expected to follow the customs wherever I stayed. After our baths, we would take the twig of tree, crush it in, and make it into a brush to clean our teeth. We would do this every day. Swamiji's disciple would climb up a tall tree and pull off a branch to make the toothbrushes. One day, Swamiji climbed the tree himself. He didn't usually do that, but this time he wanted to show me something. He was over 70 years old, but he climbed the tree easily. There was a hive of wild bees in that tree, but he made no effort to avoid it. On the contrary, he climbed up that very branch and started talking to the bees. तो वो बता रहे ना किस तरह से पेड़ों पे चढ़ के ट्विग वगैरह तोड़ के दांतों के ब्रश वो बनाते थे. तो यहाँ पर जो स्वामी की बात कर रहे हैं ना संगत जी, हैं तत्व वाले बाबा जी. इनका मैंने बहुत सुना भी हुआ था और इनका इंटरनेट पे वीडियोस भी होते हैं. TAT तत्व वाले बाबा जी जो पंजाब के थे. And the video which I saw in that video, he's 90 years old, but he doesn't look more than late 30s or I would say 40 years old. जिस तरह से भी उनकी अपनी प्रैक्टिसेस रही होंगी तत्व वाले बाबा जी. Okay. But this time he wanted to show me something. कहते अभी उस टाइम पे जब स्वामी जी उनसे मिले थे, कहते he was over 70 years old, but he climbed the tree easily. There was a hive of wild bees in that tree, but he made no effort to avoid it. On the contrary, he climbed up that very branch and started talking to the bees. From down below, I shouted, Swamiji, please do not disturb the bees. देखो इतनी सारी bees होंगी झुंड में. I covered my head because I thought if they are disturbed, they will also sting me. They were large and dangerous bees, so dangerous, in fact, that if 10 or 20 were to sting you, you might not survive. The Swami pulled off a branch right by the hive, but the bees were not aroused. कहते देखिए स्वामी जी ने तो कैसे branch pull कर दी, पर फिर भी bees बिल्कुल भी टिकी हुई थी, बिल्कुल नहीं हिली. He came down safely and said, now you go up and pluck a branch for yourself. I replied, I don't need one. I can live without it. Then I added, if you want me to climb the tree, first tell me the mantra that protected you. तो स्वामी जी तत्व वाले बाबा जी को कहते हैं, अच्छा ठीक है मैं ऊपर तो चले जाऊंगा, पर मुझे भी तो मंत्र दो जिसने आपकी रक्षा की और मेरी भी रक्षा हो सके. During that time, I was fascinated with mantras and I wanted to know his mantra because I wanted to show people what I could do. That was my purpose. The Swami said that if I climbed the tree, he would tell me the mantra. So I climbed up to the hive. He said, go nearer and talk to them face to face. Say, I live here alongside you and I don't harm you, don't harm me. इस तरह तत्व वाले बाबा जी उनको सिखाया, ऊपर जाके बस उनसे ऐसे बात करो बीज से कि मैं तुम्हारे इधर ही रहता हूँ, ना मैं तुम्हें हार्म पहुंचाऊं ना तुम मुझे हार्म पहुंचाओ. I said to Swamiji, that is not a mantra. He replied, do as I say, talk to the bees, your lips should be so close you can whisper to them. I asked, how do they know Hindi? He answered, they know the language of the heart, so they know all the languages. Just talk to them. I was skeptical, but I did exactly as he instructed, and I was surprised that the bees did not attack me. I said, Swamiji, are they tame? He laughed and said, don't impart this mantra to anyone, for it will work only for you. तो उन्होंने बोला, ये जो मैंने तेरे को चीज बताई है आपके लिए वर्क करेगी, और किसी को मत बताना ये, और भूलना मत जो मैं आपको
बता रहा हूँ, don't forget what I'm telling you. Later, when I traveled to more populated areas, I would usually stay outside the city in a garden, and people would come to see me there. I was young and immature and wanted to boast. कहते मैं तो यंग इमेच्योर था, मैं तो अपनी शेखी पकड़ना चाहता था. आई वांटेड टू ब्रैग. कहते आई वांटेड टू बोस्ट. आई वुड क्लाइम द ट्री. और हमने जैसे पहले पढ़ा, स्वामी जी मंत्र इसलिए ये जानना चाहते थे कि उस टाइम पे, क्योंकि ही वाज क्वाइट यंग, वो चाहते थे मैं एग्जिबिट करूं, हाँ भाई मेरे में बहुत ताकत है और मैं मंत्र की शक्ति से क्या क्या कर सकता हूँ. Okay. And Jakete, I was young and immature and I wanted to boast. I would climb the tree and casually take some honey from the hive without incurring a single sting. It was always a surprising feat. ये तो मेरे लिए बहुत, जैसे मैंने कोई बहुत, जैसे कहते हैं ना स्वामी जी कहते हैं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है, जैसे मैंने कोई तीर मार लिया हो. Okay. When I was in Bhiwani, Punjab, a goldsmith, कहते, whom I knew well requested, please give me the mantra. I agreed. Forgetting that the Swami told me, क्योंकि हमने पहले पढ़ा उनके तत्व वाले बाबा जी ने उनको बोला था, जो मैं बता रहा हूँ ये किसी को मत बताना और भूलना मत. तो जब किसी गोल्ड स्मिथ, वो पंजाब के जो भवानी में रहते थे, उन्होंने बोला भी मेरे को मंत्रा दे दे, कहते हैं I agreed. Forgetting that the Swami told me that it would not work for anyone else, I told him how to talk to the bees. He climbed up to a hive and repeated the mantra, but it didn't work. तो उस टाइम पे क्या हो गया? The bees attacked him, hundreds of bees at once. He fell from the tree and we had to rush him to the hospital, where he remained in a coma for 3 days. I was worried, thinking, suppose I have killed this poor man. I prayed continuously that he would be spared. कहते, on the 3rd day, I was astonished to see the Swami, who had given me the mantra, appear at the hospital. कहते ये जो स्वामी जी ने मुझे मंत्रा दिया था, तत्व वाले बाबा जी, क्योंकि उनके इसमें पिक्चर बनी हुई है, तत्व वाले बाबा जी ने जो मंत्रा दिया ना, वो एकदम से हॉस्पिटल में अपीयर हो गए. अगर आप लिखेंगे ना यूट्यूब पे भी TAT तत्व वाले बाबा जी, तो उनके वीडियोस आ जाते हैं. He said, what have you done? Through your showing off, you have nearly killed someone. Let this be a final lesson to you. The man will recover in the morning, okay? But I'm withdrawing the power of this mantra from you. You can never use it again. Since that time, I have been more cautious. Sometimes, Swamiji कहते, sometimes the words of a great man can have the effect of a mantra. Whenever any great man speaks to you, you should accept his words as mantras and practice them. तो ये बहुत बड़ी स्वामी जी ने सीख सिखाई. कहते जब कोई इतना माना हुआ व्यक्ति, ग्रेट मैन, कहते वो जो कुछ कहता है ना, उसकी बात मंत्रा की तरह प्रभाव करती है. जब वो कुछ बोलते हैं ना, आपको उनके शब्द मंत्रा की तरह मान लेने चाहिए और प्रैक्टिस करने चाहिए. और ऊपर से ये भी सीख इसमें से मिलती है, अगर स्वामी जी ने उनको ये बोला कि ये आपके लिए है, ये तुमने किसी और को नहीं बतानी, पर वो भूल गए क्योंकि वो एग्जिबिट करना चाहते थे अपनी पावर. और उससे उल्टा क्या हो गया, उस बंदे के लिए वो 100 of bees, he was stung by them. और had तत्व वाले बाबा जी not appeared in the hospital, तो वो तो मर जाते. और स्वामी जी के अंदर कितनी गिल्ट फैक्टर आ जाती कि मैंने तो इस मंत्र के चक्कर में इसको जान गंवानी पड़ी. तो तत्व वाले बाबा जी ने इस तरह से हॉस्पिटल में अपीयर होके उसको उनको बचाया, जो गोल्ड स्मिथ थे. Okay, next is misuse of mantra. Next chapter. There are some manuscripts in the monastery to which access is strictly prohibited. No one is allowed to read them except the head of the monastery. They are called Prayoga Shastras. They describe very advanced practices. My master used to say, you are not experiment with this manuscript, but I was obstinate and eager to know what was written in them. तो स्वामी जी के जो शुरू की लाइफ के, वो हमें पता लग गया कि स्वामी जी स्टबन भी रहे हैं. स्वामी जी मतलब चाहे मास्टर जितना मर्जी उनका रखे, वो अपनी मर्जी से करते रहे. जो चीजें हैं, जो चीज मना की, वो तो वो जरूर करते थे. तो इस तरह से स्वामी जी ने बिल्कुल बिल्कुल अपनी जैसे जर्नी बताई है, कैसे उनका बिहेवियर रहा है, कैसे वो एक ढीठ बच्चे की तरह भी बने रहे हैं. और इसमें भी उनके मास्टर ने उनको बताया था कि तुमने ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा है ना, इसमें से कुछ भी प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करना. पर स्वामी जी कहते हैं, आई वाज लाइक अ स्टबर्न child. I was headstrong and obstinate, but I was obstinate, eager to know what was written in them. I was 18 years old, fearless but somewhat irresponsible. तो 18 साल के लड़के से तो यही उम्मीद कर सकते हैं हम. I thought, I'm quite advanced. Why did they write this manuscript if they ought to be left unused?
I should do experiments with the practices in this manuscript. My master is very powerful. He will protect me if anything goes wrong. तो स्वामी जी हर चीज के उनके पास एक्सक्यूज तो तैयार ही होता था. कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट का फायदा क्या, अगर उनको यूज ना किया जाए, अगर कुछ हो भी जाए तो कोई बात नहीं, मेरे मास्टर्स हैं मुझे बचाने के लिए. My master gave me one of these manuscripts to carry for him on a journey. He said, do not open it. I was very curious and resolved, if he leaves a manuscript with me and I find myself alone, I am going to read it. One evening, we came upon a small dwelling on a bank of the Ganges. My master went inside the hut to rest. I thought, here is my chance to study the manuscript. तो उन्होंने सोचा, स्वामी जी ने कहा, make hay while the sun shines. चलो मैं फायदा तो उठा दूंगा, मेरे मास्टर जी तो हट में चले गए रेस्ट करें, उनको क्या पता चलेगा. There were no windows and the only one door in the little dwelling. I locked the door from the outside. तो मुझे लगता है शायद उनके मास्टर की बात बता रहे हैं कि किस तरह से. I'm going to read again actually. One evening we came upon a small dwelling on the bank of the Ganges. My master went inside the hut to rest. I thought, here is my chance to study the manuscript. There were no windows, only one door in the little dwelling. I locked the door from the outside. तो उन्होंने वो डोर को बाहर से कुंडी लगा दी. I thought that I would spend the whole night discovering what was in the manuscript. It was a moonlit night and I could see clearly. The manuscript was wrapped and tied with a string. I took my time to unwrap it and then started reading. It described a certain practice and that effect it would produce. तो उस मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ प्रैक्टिस बताई थी और उसका ये भी बताया था उसका प्रभाव क्या होगा आगे. After reading for an hour, I thought, why not try it? So I put the manuscript aside. It said that only very advanced yogis should do this practice and that if it were not done properly, it was very dangerous. तो उसमें बताई थी, वार्निंग दी हुई थी कि बहुत एडवांस योगी है ना वो ही कर सकता है, अगर कोई ऐसे नाइब कोई बंदा करेगा तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है. कहते एट दैट यंग एज आई थॉट आई वाज वेरी एडवांस. तो बहुत हंसी आती है बड़ी. तो स्वामी जी कहते उस टाइम मेरे को तो ऐसा था, अभी मैं तो बहुत एडवांस हूँ. सो आई कमेंस डूइंग इट. मैंने स्टार्ट कर दिया. It involved a repetition of a special mantra in a particular style with certain rituals. That mantra awakens a power outside of a person as well as inside. कहते हैं उस मंत्र से क्या होता है, एक शक्ति बाहर भी आती है इंसान के और अंदर से भी आती है. The book said that the mantra had to be repeated 1001 times. I repeated it 900 times and nothing seemed to be happening. I concluded there would be no effect. But one night when I came to 940, I saw a huge woman nearby. एक मुझे औरत दिखाई दी बहुत बड़ी. She gathered some wood and started making a fire. Then she put water in a big vessel and put it on the fire to boil. By then I had counted to 963. The last I counted was 970. And after that I lost track because I saw a huge man coming from the same direction. And first I thought, this must be the effect of the mantra. I will not look at him and complete the 1001 repetitions. तो जब उन्होंने पूरा कर लिया, but he started coming toward me. वो तो मेरी ओर आने लगा. I had never before seen or even imagined such a gigantic man. इतना बड़ा mammoth, इतना बड़ा gigantic man, and he was completely nude. He asked the woman, "What have you cooked for me?" जो इतना बड़ा gigantic man, उस औरत को उसने पूछा कि तुमने खाने में क्या बनाया? She said, "I have nothing. If you give me something, I'll cook it." तो उस बड़े gigantic man ने स्वामी जी की तरफ इशारा किया. He pointed at me and said, "Look at him sitting over there. Why don't you cut him into pieces and cook him?" When I heard that, Swami ji कहते, my teeth clenched and the mala I was counting with fell from my hand. I fainted. I don't know how long I remained unconscious. When I regained consciousness, my master was standing in front of me. He slapped me on the cheek and said, "Hey, wake up." I would become conscious momentarily and explain, "Oh, the giant is going to carve me up," and then lapse into faint again. This happened 3 or 4 times until finally my master kicked me, became more insistent and said, "Get up. Why have you done this? I told you not to practice this mantras and you locked me in, you foolish boy." तो इतनी हंसी वाली बात है, उन्होंने अपने मास्टर की जो रेस्ट करने गए थे उनको बाहर से लॉक कर दिया था कि अब मैं आराम से पढ़ता हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे. और मास्टर कहते हैं, "I told you not to practice this mantra and you locked me in, you foolish boy. From this experience I came to realize the power of mantra की शक्ति. हर मंत्रा में कुछ ना कुछ तो शक्ति होती है ना. और इधर तो इन्होंने तो पूरी जितनी गिनती थी पूरी की.
I started practicing the mantra which my master had given me, and I began to count on even for little things. I did many foolish and silly things when I was young, but my mantra, which created awareness for me, always helped me to come out of the situations. अब स्वामी जी क्या कहते हैं, देखो मंत्रा की कितनी वैल्यू है, कितनी शक्ति होती, कहते इफ मंत्रा इज नॉट प्रॉपर्ली यूज्ड विद स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ना, इट कैन लीड टू hallucinations as it did for me. Hallucinations are the products of an impure and untrained mind. Mantra becomes helpful when the mind is purified and directed inward. Without knowing the meaning of the mantra, the proper feeling cannot be aroused, and without strong feelings, mantra and its technical repetition is not of much use. तो इस चैप्टर में क्या सीखने को मिला, एक तो ओबीडियंस, कि हाँ उन्होंने अपने उनकी ओबीडियंस नहीं मानी, उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ लिए और इतने शरारती थे स्वामी जी की, मतलब सच में स्माइल आती है कि इनकी नटखट हरकतें देख के, शरारतें देख के स्वामी जी की, कैसे अपने मास्टर को उन्होंने लॉक कर दिया और उसके बाद चलो आराम से पढ़ने लग गए। पर उस मंत्रा की ऐसी वो हुई कि उनको एक इतना जाइगेंटिक न्यू बंदा नजर आया, और जो कुछ औरत बना रही थी वो कहती चलो ठीक है इसको हम काट के खा के बना लेते हैं ना, अगर स्वामी जी ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो हर टाइम उनके मास्टर इतना अनकंडीशनल प्यार करते हैं कि हर टाइम उन्होंने स्वामी जी को बचाया। और देखिए बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं ना, कई बार कोई किसी को दे भी देते हैं, अभी ये मंत्र कर लो ये पैसा मिलेगा, ये मंत्र कर लो ये शक्ति मिलेगी। तो हमें तो गुरुजी ने इन चीजों से दूर रखा है, बिकॉज वी फॉलो एंड वी जस्ट लव दिस मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र जिसको सबसे ऊपर कहा जाता है, सबसे सबसे ऊपर कहा जाता है। और बहुत प्यारा मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इस ब्यूटीफुल मंत्र। बट अगर कोई और ये भी प्यार से करना चाहिए, नॉट टेक्निकल रेपिटेशन डजंट सर्व द पर्पस। अगर हम गिन गिन के मंत्रा करें वो आपके ऊपर है, किस तरह से करते हैं। और पहले हमें जो ओम के बारे में पढ़ा उसके बारे में मुझे एकदम से याद आया, डिफेंस कॉलोनी के जहाँ एक्वेरियम पड़ा होता है उधर जब वहां से एंटर करते हैं तो वहां गुरुजी हमेशा लेग्स क्रॉस करके ओम ऐसे बजिंग साउंड बोलते रहते थे, गुरुजी हमेशा बोलते थे, बिकॉज गुरुजी हिमसेल्फ is Om. Om क्या है? This primordial sound, like it is. I mean, Om का तो सबको ही पता है कि Om ही सब कुछ है। जब और भी कुछ नहीं था तो ये Om ही अनहद नाद है, और गुरुजी स्वयं ही Om है। और कभी भी कोई किसी को ऐसे ही मंत्रा दे दे तो नहीं करना चाहिए। मंत्रा बहुत प्यार से करते हैं, बिकॉज उस मंत्रा से एनर्जी क्रिएट होती है, और एनर्जी से वातावरण की शुद्धि होती है, विल पावर स्ट्रांग होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्वामी जी का, फिर है स्वामी जी की हेडिंग ये लिखी, आई रिसीव अ बीटिंग। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट कि स्वामी जी की एज उस टाइम क्या थी। हमने हर उनके एज में रूप देखे हैं, किस तरह से नटखट स्वामी जी कुछ ना कुछ शरारतें करते रहे। बट या स्वामी जी वुड नॉट हाइड हिज फीलिंग्स, जो उनके मन में होता था वो मुख में होता था। उनको ये नहीं होता था कि मैं अपने मास्टर को प्लीज करूं। इफ ही वाज स्टबर्न इन फ्रंट ऑफ हिम, इफ ही हैड समथिंग, और ही वुड से। और मुझे तो सबसे हंसी आ रही है कि जब वो उनको लॉक कर देते हैं बाहर से और खुद मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं। Okay, next is I receive a beating. कहते once I was maintaining silence in order to watch my inner feelings and observe my behavior. I was living on a bank of the Sarau River outside of Ayodhya, the birthplace of Rama. People there knew that I was practicing silence and could not ask for food, so they brought me meal once a day. तो इसमें स्वामी जी वही अपना जैसे मौन व्रत के बारे में बता रहे हैं। कहते मैं अपनी शक्ति अंदर की देखना चाहता था, अपनी फीलिंग्स। Okay. It was summer and I didn't have any shelter. Suddenly one evening thundering clouds appeared and it started raining heavily. I had only one long blanket with which to cover myself. So I started going toward one of the temples to get out of the rain. It was already dark. When I entered through the backside of the temple and sat under the portico, three temple guards came with bamboo sticks and asked what I was doing there. They thought I was a thief. Since I was keeping silence, I did not respond to them. So naturally, वो टेम्पल के गार्ड्स ने सोचा ये कौन है, कोई चोर तो नहीं है। वो स्वामी जी कहते मैं तो मौन व्रत में, मैं कैसे बोलता कुछ। Then they started hitting me very hard with their sticks. ओहो, तो स्वामी जी ने कितनी मार भी खाई उनसे। Then they started hitting me very hard with the sticks. I was knocked unconscious by the blows. The temple priest came with a lantern to see who the intruder was. My head was bleeding and there were many bruises all over my body. The priest, who knew me well, was shocked to see my horrible condition. When I became conscious again, he and the servants of the temple began apologizing
for this serious mistake. That day, I realized that practicing austerity is not easy. I continued in my path of self-training, but I stopped roaming in the cities. Among all the methods for training and therapies, the highest of all is that of self-training, in which one remains conscious of one's mind, action, and speech. I used to build up my sankalpa, right, determination, and always kept track of my feelings, thoughts, speech, and actions. ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम भी ट्रैक रखें ना अपनी फीलिंग्स का, किस तरह की हमारी फीलिंग्स हैं, क्या फीलिंग्स हम सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या हमारी स्पीच है, क्या एक्शंस हैं, तो we can really walk on the righteous path. During those days, I found that whenever I would calm down my conscious mind in meditation, the bubbles of thoughts would suddenly come up from the unconscious mind. In learning to control the mind and its modification, it is essential to go through the process of self-observation, analysis, and meditation. Learning to control the mind and careful study of the relationship between the conscious mind and the unconscious mind took me a long time. Okay, many times I thought, now I've conquered my thoughts, my mind is under my control. But after a few days, some unknown bubble would arise from the bottom of my unconscious and would control my conscious mind, thus changing my attitudes and behavior. At times, I was disappointed and depressed, but I always met someone who helped and guided me. As an aspirant, it's always wise to be vigilant and firm in practicing meditation without expecting much in the beginning. I was told there is no instant method of meditation. Modern students expect immediate results from meditation, and this expectation causes them to fantasize, imagine, and hallucinate many things, which they think are spiritual experiences, but are actually products of the unconscious mind. As a result, the frustration imbalances them, and either they stop meditating or they start following strange methods harmful to their progress. तो ये तो है ही है, हमें भी सेल्फ एनालिसिस जरूर करना चाहिए, अपने थॉट्स के ऊपर देखना चाहिए. सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट ऑब्जर्वेशन. बाकी जो इसमें मेडिटेशन का बताया है, कहते हैं मेडिटेशन में कई बार क्या होता है ना, लोग सोचते हैं, फैंटेसाइज करने लग जाते हैं, इमेजिन करते हैं, हेलुसिनेशन भी करते हैं, और ये कहते हैं हमारी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो उनको आते हैं, बट जो भी है वो कहते हैं कि इस तरह की जो फ्रस्ट्रेशन आती है ना, कई बार आपको जब नहीं उस तरह के रिजल्ट मिलते तो इम्बैलेंसेस क्रिएट करते हैं, एंड कई बार वो फिर लोग मेडिटेशन स्टॉप कर देते हैं. बट मैंने तो गुरुजी के साथ यही लिखा है, गुरुजी, द ट्रू मेडिटेशन इज टू सिट इन ग्रैटिट्यूड फॉर यू, वेयर वी डोंट वांट टू सी एनीथिंग. We don't want that our kundalini should get awakened, because we don't want to get into these practices. We just want to be, that's my actually personal thing. शायद आप लोग भी इससे रिलेट करें कि सबसे प्यारी मेडिटेशन है अपने गुरुजी के लिए आंखें बंद करके उनके शुक्राने के लिए बैठना, जिसमें हमें ये नहीं है कि हमें ये चीज नजर आए, वो चीज नजर आए, या मेरी पीठ की हड्डी बिल्कुल सीधी होके बैठे. उसमें सिर्फ आप शुक्र करके बैठते हैं, एंड यू नॉट इवन बॉदर अबाउट मच अबाउट द पोस्चर. इट्स ऑल अबाउट लव, लव, लव. Okay, the next chapter is unique practice of tantra. अब स्वामी जी कहते हैं, my brother disciple, कहते जो मेरा brother disciple थे ना, whose father was a learned Sanskrit Pandit, was from Midanipur, Bengal. कहते when he was 18 years old, before I had met him, his family forced him to get married. उसके family ने उस पर बहुत जोर लगाया, भी तू शादी कर ले. The marriage ceremony was being performed in the evening, and thus suited his plans well. कहते during a Hindu wedding, the bride and groom participate in a fire ceremony and take 7 steps around the fire. On the 4th step, he jumped out of the ritual. कहते जब जो 7 फेरे होते ना, जैसे चौथा हुआ वो तो भाग गया फील्ड्स में. Okay, he jumped out of the ritual and ran into the fields. The people in the wedding party did not understand his behavior. They began to chase him but could not catch him. He walked for several days until he reached the banks of the Ganges and started following the river in search of a spiritual teacher. For 6 years, he went through many experiences, but he did not find a teacher. Then he met my master at Srinagar in the Himalayas. When they met, my master embraced him and knew what they had known. And knew that they had known each other before. जब ये स्वामी जी के मास्टर को मिलते हैं तो ये एक दूसरे को embrace करते हैं और इनको अंदर से पता होता है कि हम तो आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं. My brother disciple lived with my master for 3 months and then was instructed to go to Gangotri, where we stayed in a cave together. One day he began talking about his hometown, Midanipur, and told me that if ever I visited there, I should tell his family that he had become a renunciate and live in the Himalayas. Soon after that, I visited his home and met the woman to whom he was to have been married. I visited his home and met the woman to whom he was to have been married. She was waiting for him to come home.
तो उस वुमेन को स्वामी जी मिले, जैसे तो 4 ही फेरे हुए ना, पूरे फेरे तो हुए नहीं थे उनके। तो कहते वो तो अभी तक उसका इंतजार कर रही थी। आई सजेस्टेड टू हर, मैंने उसको बोला दैट she get she should get married to someone else because the marriage ceremony had not been completed. कहते on hearing such advice from me, she said, you and your brother disciple are the worshippers of the devil and not of God. She was in fit of anger. तो वो औरत इतने गुस्से में भरी थी, she got exasperated, furious. कहती तुम तो एक शैतान की पूजा कर रहे हो, भगवान की थोड़ी कर रहे हो। कहते मैं स्वामी जी अब क्या करते। He went back to his hut. I went back to my hut, which was situated outside the village. In that area, Tantra was practiced. Practically all the homes of this area worship Mother Divine, calling her Ma Kali. I had heard much about Tantra and had read a few scriptures. I wanted to meet someone who could really demonstrate the practices so that I would have no doubts of their validity. One of my brother disciples' cousins in that village introduced me to a Mohammedan tantric who was 92 years of age. I went to see him and we talked for 3 hours. He was famous there as a Maulvi, a priest that leads the prayers in the mosque and knows the Quran, the sacred Bible of Islam. The next morning, the Maulvi took me to the pond outside the village. He also brought a chicken. First, he tied the chicken with a string, and then he tied the other end of the string to a banana plant. He told me to sit down and watch attentively. He was muttering something and throwing black-eyed peas on the string. The chicken fluttered and became lifeless. He said the chicken is dead. I thought, this is not being creative. It's a very bad problem. It's black magic. He asked me to make sure that the chicken was dead. I said, can I put the chicken under water for some time? He said, go ahead. I kept the chicken under water for more than 5 minutes and then took it out. To my knowledge, the chicken was dead. Then he brought the chicken back to the life by performing that some ritual of throwing black-eyed peas and muttering something. This really shook me up. He said, now tie one end of the string on the banana plant and tie the other end to your waist. I'll show you something different. Instead of doing what he said, I ran as fast as I could toward the village. तो स्वामी जी तो कहते ना बिल्कुल ही भाग गए वहां से। कहते मैं इतना तेज भागा वहां से अपने विलेज की तरफ, leaving the old Maulvi and his chicken far behind me. When I arrived, I was breathless, and the villagers did not know why I was running so fast. I told them that the old Maulvi wanted to kill me, but no one believed me, for in that area, it was considered to be a very holy man. I thought I had better leave this place and tread my path instead of seeking such miracles. From this place, I went to Calcutta to stay a few days with the Chief Justice R.P. Mukherjee. When I told him of my experience and asked if I had imagined it or hallucinated, he said, no, such things happen. Later, I asked some sages how such a miracle was accomplished. They could not explain it, but acknowledged that Bengal was famous for such practices. When I related this story to my master, तभी तो हम बहुत ads पढ़ते हैं ना जिसमें बंगाली बाबा लिखा होता है. Bengal was famous for such practices which are related to story to my master. He laughed at me and said, you need exposure to all sort of things. Although you should not attempt to practice yourself, you should follow only that discipline which has been given to you. This sort of tantra is not the real science of tantra, but is an offshoot of tantrism. The power of the mind can be used in many ways. Without knowledge of the goal of life, mental faculties can be directed negatively or harming others, while ultimately this misuse of mental power is destroying the person who practices it. There still exist a few people with such tantric powers, but out of 100, one is genuine and the other 99 are magicians. तो उसमें यही सीखने को मिला ना कि स्वामी जी जाते हैं, वो देखते हैं, जो भी चीप ट्रिक्स करके दिखाए, चलो जिस तरह का भी तांत्रिक विद्या ब्लैक मैजिक टाइप दिखाया, तो स्वामी जी तो भाग गए वहां से. तो स्वामी जी कहते ये तो कोई बड़ी चीज तो दिखाई नहीं है, बट जिस तरह से उनको लगा कि वो चिकन मरा हुआ तो उसको जान में ला दिया, तो इट्स नॉट अ बिग डील. बट उनके जो मास्टर उन्होंने बताया कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं, बट कोई ही होगा जो सच्चा होगा, बाकी तो सब ऐसे ही 99% तो सब मजिशियंस ही हैं और सिर्फ वो मिसयूज करते हैं पावर्स. देखिए एनर्जी है ना, अगर आप उसको अच्छी चीजों के लिए यूज करेंगे वो व्हाइट मैजिक बन जाएगा, बुरी चीजों के लिए यूज करोगे तो ब्लैक मैजिक बन जाएगा. पर ये चीजें अल्टीमेटली इट्स लाइक अ बूमरैंग, जो करते हैं वो वापस आएंगी ही आएंगी. तो इन चीजों में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए. दीज आर रॉन्ग थिंग्स. कई लोग बंगाली बाबास, कई लोग तांत्रिक, कई लोग ऐसी चीजें काम करवाने अपना चले भी जाते हैं, गुरुजी को मानने के साथ साथ भी चले जाते हैं, नॉट नोइंग दैट गुरुजी इज वॉचिंग एवरीथिंग. तो इन चीजों में कभी नहीं पड़ना चाहिए. As you sow, so shall you reap. तो वो वापस तो आता ही है. Next is you have committed many thefts. Next chapter. कहते in my youth
अब स्वामी जी क्या बोलते हैं, कहते हैं इन माई यूथ आई वाज सर्चिंग फॉर मिरेकल्स, कहते वंस व्हेन आई सॉ अ पर्सन लाइंग ऑन अ बेड ऑफ नेल्स, है ना, वो जो किल होते हैं, वो उनके मतलब उसका जैसे पूरा बेड बना तो उसके ऊपर एक बंदा लेटा हुआ था। आई सेड टू हिम आई विश आई कुड डू दैट, क्योंकि उस एज में स्वामी जी गॉट रियली enthralled and enamored by these tricks। हालांकि स्वामी जी के पास तो खुद इतने बड़े मास्टर थे, और देखो मास्टर उनके इतने, वो उन्होंने अपनी चीजें फोर्स नहीं की, उन्होंने कहा चलो ठीक है ये ले ले अपना एक्सपोजर, ये चले जाए हर किसी के पास, इनको खुद रियलिटी पता चल जाएगी कि ट्रू मास्टर होता क्या है। उनकी एज ऐसी थी, ही गॉट रियली फैसिनेटेड, किसी के पास पावर्स आती थी। हमने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी देखा है कैसे परमाहंस जी एक के बाद एक के बाद एक के बाद जाते हैं, पर उनको अल्टीमेटली लहरी महासर युक्तेश्वर महाजी महासे मतलब लहरी महासर युक्तेश्वर बाबा जी, और मतलब जो ट्रू गुरु होते हैं ना वो कभी भी एग्जिबिट नहीं करते हैं, बट जो ट्रू मास्टर होते हैं वो भी फिर इस जर्नी में इंटरफेयर नहीं करते। वो कहते ठीक है, लेट देम टेक द एक्सपोजर, लेट देम टेक द डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड दे वुड नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग। नहीं तो वो धमका के भी बिठा सकते थे स्वामी जी के मास्टर, बट नहीं, he just wanted him to learn from first hand experience rather than imposing his own thoughts on him. So Swamiji कहते, in my youth I was searching for miracles. Once when I saw a person lying on the bed of nails, I said to him, I wish I could do that, can you teach me? He said, of course, but first you will have to beg alms for me and bring money for me. If you promise that you will give me whatever money you have, I will teach you. कहते, one after another I met many such people and they despised each other, saying he's nothing, I'll teach you something better. तो कहते मैं एक के बाद ऐसे लोगों को मिला तो वो एक दूसरे को तो सब नीचे गिराने को आए, वो क्या है, तो कुछ नहीं, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। और one of them had a big steel needle and he pushed it through his arm. He said, see, there is no bleeding, I'll teach you this and you'll be able to make money by demonstrating it for others, but you will have to become my disciple and give me a part of what you earn. तो ये तो कोई बड़ी चीज तो है नहीं है कि आप एक नीडल को अपने शरीर से निकाल रहे हैं और खून नहीं निकल रहा, ये क्या है, ये कोई भक्ति थोड़ी है, ये कुछ भी नहीं है चीजें। Okay, I left him and went to another person. Many people respected this man. I wanted to know why so many people followed him around. I wondered, what exclusive knowledge does he have? Is he wise? Is he a great yogi? I stayed with him until everyone went away. When I was alone with him, he asked, which is the most luxurious hotel that you know of? I said, the Savoy Hotel in London. He said, you pay me 100 rupees and I'll get you some delicious food from the restaurant of that hotel. I gave him 100 rupees and suddenly some food appeared before me exactly as it was prepared at that hotel. Next, I asked for some food from Hamburg, Germany again. I paid him 70 rupees and then he got the dish I requested. It appeared along with the bill. I thought, why should I go back to my master? I'll stay with this man, with all my needs will be taken care of. Then without any botheration, I can quietly meditate and study. यही है ना, स्वामी रामा जी फिर एनामर्ड हो गए इन सारे ट्रिक्स को देख के। वो कहते मुझे क्या जरूरत है अपने मास्टर के पास जाने की, मैं तो यहाँ आराम से खाऊंगा पीऊंगा और मुझे कोई बॉदरेशन नहीं, मैं आराम से यहाँ बैठ के चैन से मेडिटेट करूंगा पढ़ूंगा। He asked, what type of watch do you want? I replied, I already have a good watch. But he said, I'll give you a better watch. And he did it. When I looked at the watch, I thought this watch is manufactured in Switzerland. He is not creating these things. He is only doing a trick, transporting them from one place to another. अब देखो वो जो भी उनके लिए लाए होंगे वो ट्रांसपोर्ट ही हो गई ना चीज जहां से लाए थे। कहते 2 weeks later, I went to him again and bowed before him. I gave him an oil massage and helped him cook food. He was pleased with this. तो स्वामी जी तो जैसे मस्का लगा रहे थे उनका, उन्होंने उनको तेल भी लगाया, उनके लिए खाना भी बनाया. He was pleased with this and he instructed me so I could do things similar to those he had done. I practiced until one of the swamis from a monastery came and slapped me saying, what are you doing? He took me to my master who said, you have committed many thefts. I asked, what thefts? जब उनके मास्टर को पता चला, कहते पता भी है ये तो तुम चीजें मिला रहे हो वहां से, तुम्हें पता भी है, तो चोरी ही तो है. He answered, you ask for sweets and they come to you from someone's shop. They disappear from the shop and the owner does not know what has happened to them. I promised my master that I would never do it again. स्वामी जी realized his mistake कि ये ऐसे तो नहीं है ना कि कोई चीज एकदम से प्रकट होगी, जो ट्रांसपोर्ट होके आई है वो वहां से तो गायब हुई है ना. Later, I met a man who worked as a salesman in a store that sold sewing machines in Delhi. I told him about the Haji and his powers. The salesman said, if he can get a single sewing machine from my store in Delhi, I will
consider him to be the greatest man alive and follow him for the rest of my life. So we both went to him and requested him to perform the miracle. He said, I'll get it. I will get it immediately. And it appeared. Then the salesman became concerned that it would be missing from the store and he might be accused of stealing it. Obviously, जब वो मशीन वहां पर आ गई तो सेल्समैन कहते अगर वो वहां से गायब हो गई तो इल्जाम तो मेरे पे आ जाएगा ना. The Haji tried to send it back. उसने कोशिश की हाजी ने अपनी पावर से कि वापस भेजे, पर वो हो ही नहीं सका. But he could not do so. He started weeping and crying, oh, I have lost my powers. When the salesman returned to Delhi, he took the machine with him. In the meantime, at the store, they had discovered the machine was missing and they reported the matter to the police. The police found it in the salesman's possession and he was taken to the court. No one believed his story. अब वो तो समझाने की कोशिश कर रहा है अभी किस तरह से ट्रांसपोर्ट कौन मानेगा, दुनियावी जिंदगी में तो कोई मानेगा नहीं ये चीज. No one believed his story and the salesman was punished. Okay, so he had to bear the brunt, rather he became the scapegoat. तो किया तो उन्होंने क्योंकि पार देखना चाहता था पर उनको भुगतान करना पड़ा. I had many such experiences and I insulted my master many times by saying there are people who have powers greater than yours, so I like to follow them. He said, oh, go ahead. I want you to grow and be great. You don't have to follow me. तो कितने अच्छे उनके स्वामी जी कहते ठीक है, go ahead, करो अपने. You want to grow like this? Okay, fine. मैंने तो कहा ही नहीं you follow me. Later, I realized that mostly such phenomena are tricks. Wherever they are found to be genuine, they are black magic. Spirituality has nothing to do with these miracles. ये बहुत अच्छी चीज है जो spiritualism है ना, ये इन powers, इन tricks से spiritualism का कोई लेना देना नहीं है. The third chapter of the Yoga Sutra explains many methods of attaining these powers. But these siddhis create stumbling blocks in the path of enlightenment. One person in million does indeed have siddhis, but I have found that such people are often greedy, egoistical, ignorant. The path of enlightenment is different from the intentional cultivation of powers. The miracles performed by Buddha, Christ, and other sages, great sages, were spontaneous and for a purpose. They were not performed with selfish motives and to create a sensation. On the path of yoga, sometimes one comes across the potentials of siddhis. A yogi without having any desire for a siddhi might get one, but one who is aware of the purpose of his life never misuses them. Misuse of siddhi is a downfall of a yogi. To commit a theft is accepted to be crime socially and morally. Jugglery is not a part of yoga. Siddhis do exist, but only with adepts. देखो कोई रिद्धि सिद्धियां हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. कई लोग तो तपस्या रिद्धि सिद्धि के लिए करते थे. हमने देखा है पुराने जमाने में भी जब इतनी तपस्या की जाती थी तो ईश्वर दे देते थे वरदान, क्योंकि ईश्वर का तो है ना. उन्होंने ईश्वर कहते ठीक है तूने इस चीज के लिए तो मैं तुम्हें दे देता हूँ. पर सबसे बड़ी चीज होती है भक्ति करना, ईश्वर की सेल्फलेस भक्ति करना, प्यार से भक्ति करना. पानी के ऊपर चलना या आग को मुंह से निकाल देना या नीडल को ऐसे कर देना, ये कोई भक्ति थोड़ी होती है, ये तो दिखावा हो जाता है ना. और जिनके पास असल में सिद्धियां हैं वो कभी भी दिखावा नहीं करते, शायद वो सिर्फ कल्याण करने के लिए यूज करते हैं. हमने बहुत बारी ऐसे गुरुजी के भी सत्संग सुने जहां पर इतने इतने बड़े महात्मा योगी भी आए, उन्होंने क्या क्या शक्तियां दिखाई. और गुरुजी तो हमारे कभी भी ऐसे, पर जब गुरुजी कुछ दिखाते थे वो दंडवत प्रणाम करते थे. और वो भी गुरुजी को उनको मतलब इन चीजों के लिए कई बार अपना एक ग्लिम्स देना पड़ता था कि तुसी केड़े चक्करां च पए हो. जैसे एक बारी किसी ने आके ये भी बोला तानू पता है मेरी उम्र कितनी है, पता नहीं 100 या कितने साल. तो गुरुजी कहते तू तो हल्ले भी उम्र ते चक्करां च पिया. क्योंकि जो हम्बल सेंट्स होते हैं वो कभी भी अपनी चीजों को एग्जिबिट नहीं करते. पर गुरुजी ने हमेशा, गुरुजी की तो पावर तो कहना ही नहीं चाहिए, गुरुजी सब कुछ है, अखंड सब कुछ है. वो सिर्फ उन्होंने कल्याण करने के लिए इस्तेमाल किया. जैसी जिसकी सोच वैसा गुरुजी ने अपने आप को प्रेजेंस दिखाई अपनी, जैसी जिसकी सोच है. अगर कई ऐसे होते हैं ना तो वो तो ये भी नहीं कुछ कहेंगे गुरुजी हमें ये चीज दिखाओ. गुरुजी को पता है इस भगत को मेरे पे वैसे ही विश्वास है तो मैनू की लोड़ है इनू दिखाने दी या उस तरह से दिखाने की. हम गुरुजी से मांगते हैं, गुरुजी आप प्रेजेंट है, उनको दिखानी पड़ती है. वो हमारी छोटी छोटी खुशियां पूरी करते हैं. पर मुझे लगता है जब हमें पता है वो रब है, हर कहीं है, तो हमें क्या जरूरत है उनको ये कहने की क्या चीज है वो नहीं कर सकते. हम सब गुरुजी के ही अंदर हैं. ये सारी सृष्टि शिव है, ये सारी सृष्टि शिव है और हम शिव के अंदर हैं. तो हम गुरुजी को उस लेवल पे ना लेके, गुरुजी कहते हैं मैंने ताड़े लेवल ते आना पिया और हम कहते हैं गुरुजी आज हमें ये दिखाओ, ये प्रेजेंस दिखाओ. मुझे लगता है क्यों उनको कष्ट दें. आप मानो तो वो हर कहीं है. प्यार में सबूत नहीं मांगा जाता, पर प्यार में प्रूफ नहीं मांगा जाता. प्यार में सिर्फ प्यार होता है और प्यार सिर्फ फील किया जाता है. यू कांट एग्जिबिट.
So never ever get enamored by, if you see somebody has powers, if somebody has a riddhi siddhis, it's not a big deal. सबसे बड़ी चीज होती है जो भोला भाला भगत है, कहते भोले पावना ही रब मिलते हैं. तो इन चीजों में तो पढ़ना नहीं चाहिए, but that's a beautiful story how his master, Swamiji's master, allowed him to go through and to experience and to get exposure so that nothing should, because that's a beautiful thing. जिदा गुरु जी कभी भी किसी चीज तो फोर्स नहीं करते सीगे. गुरु जी ने क्या कराया था, की क्या कराया, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, that's a very big thing. So I think it's beautiful book of Swami Ramaji. And though Swami Ramaji himself has penned down lots and lots of books, और उनके आगे जाके जो डिसाइपल्स हैं उनकी भी मैंने काफी किताबें पढ़ी हैं, कैसे स्वामी जी को याद करते थे, स्वामी जी ने किस किस तरह से मदद की है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ स्वामी जी, जहां पर उन्होंने कुछ भी हाइड नहीं किया. उनके थॉट्स, उनकी इमेच्योरिटी, उनकी नॉटीनेस, उनके ब्लंट आंसर, और कुछ भी है, दैट्स ब्यूटीफुल. So thank you Guruji for making us read this beautiful book of Himalayan masters. और इसके कंपैरिजन से हमें पता लगता है कि गुरुजी हमने तो ऐसी कुछ भी चीज भी नहीं की आपके लिए, कोई तपस्या भी नहीं करनी पड़ी, हमें तो इतनी मुश्किलें भी नहीं झेलनी पड़ी. बस भोले भाव से आपने जो कंपैक्ट मंत्रा दिया है और सब कुछ आपने हमें बहुत सहज तरीके से दे दिया है. So thank you Guruji for making us realize your godliness in such a simple manner. So thank you Ekta ji, Shilpi ji, Sangat ji, thank you very much. बोलने टाइम फंबल करती है, गलत प्रोनाउंसिएशन भी निकल जाती है, but forgive me. And thank you Guruji, thank you Himalayan masters, thank you Swami Ramaji, thank you.